Welcome back to this session. So today in this session, we'll be solving more numerical for a cantilever beam. Let me read its statement. Find the reaction at the fixed end of the cantilever beam loaded as shown in the figure below. Draw SFD and BMD. Now our cantilever beam is given loaded with the loads along with the length of the beam. So for this, we need to draw SFD and BMD. So let us get started. The diagram is given as shown in the figure given below. So let us start by finding its reaction. So it will have only one reaction, which is at A, RA. So we have RA will be equal to total load on the beam, which is 20 plus 15 into 1. So this will be coming equal to 55 kilonewton. Okay. Now let's find shear force. Number 2, shear force calculation. Now in shear force, let us start by finding from point A. So point A पे we have reaction RA, और reaction RA कितने मिला 55 kilonewton, right? So RA पे we have a force going from bottom to top, right? So bottom to top जा रहा है तो positive है, so equals to positive RA, which is equals to 55 kilonewton. Now let's find force at C, left hand side of C. So C का ये डायरेक्शन पे कितना आएंगे, लास्ट फोर्स मिला था 55 kilonewton, और उन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो सेम रहेंगे. Now force at C, right hand side direction पे, force at C right hand side will be equal to last force 55 मिला था, और C के ऊपर we have 20 kilonewton load acting, so it will be minus 20. This will come equal to 35 kilonewton, right? Similarly, we have, I'll solve it here, force at D and to the left hand side of D. So D का left hand side लो तो ये डायरेक्शन पे आएंगे. So कितना आएंगे, लास्ट फोर्स 35 मिला था, so ये लास्ट फोर्स यहाँ पर एडिशन करके लेके जाएंगे 35, और C और D के बीच पे कोई लोड आ रहा है, देयर इज़ नो लोड कमिंग. सो जो C पे आया है राइट हैंड साइड C के डायरेक्शन पे वो कांस्टेंट रहेंगे यहाँ तक, सो 35 किलोन्यूटन ही रहेंगे. नाउ फोर्स एट D एंड टू द राइट हैंड साइड ऑफ D. अब D का राइट हैंड साइड इधर साइड पे जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर जा रहे हैं तो D के ऊपर 20 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लास्ट फोर्स दैट वी गॉट इज 35 माइनस 20, माइनस अभी UDL भी लग रहा है, तो अभी UDL शुरू ही हुआ है, तो उसका लोड कितना रहेंगे, डिस्टेंस कितना रहेंगे 0. सो आई हैव 15 into 0. So this will be coming equal to 15 kilonewton. Now force at B point पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर 0 आना चाहिए. So let us see if we get 0 or not. Force at B will be equal to last force that we got is 15 minus UDL 15 into 1. So 15 minus 15 is equals to 0. So we got it right. Right? Now let's draw the shear force diagram. So at A I have 55 kilonewton. Say B, C tak bhi it is constant, so I join this line, it is 55 kilonewton. Okay. Now C का right hand side पे जब ये डायरेक्शन पे C का right hand side पे जा रहा है, तो it is decreasing. कितना डिक्रीज हो रहा है, 35 हुआ है, 55 से 35, so let me write it here, 35 kilonewton. So I'm joining this point here. Next D पॉइंट पे आकर भी ये पॉइंट पे पहुँचते भी वो सेम फोर्स रह रहा है 35. So I'm gonna join here from here to here 35, right? Now D से जब D से इधर राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इट इज़ फर्स्ट डिक्रीजिंग
डिक्रीज कितना हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग 15 किलो न्यूटन, और ये कितना है, ये जॉइन दिस लाइन, सो वी हैव 15 किलो न्यूटन हेयर, और बी पे पहुँचते पहुँचते इट इज़ बिकमिंग 0, सो फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ 0. So this is my positive shear force diagram. Right, so this is my A point, B point, C point and D point. So यहाँ पर this is the shear force diagram. Now let us find the bending moment. Right, number 3, bending moment calculation. नाउ हमें पता है कि कैंटिलीवर बीम के लिए जहाँ पर फ्री एंड होते हैं वहाँ पर मोमेंट 0 होंगे. सो फ्री एंड कहाँ पर है, बी पॉइंट पे है. सो मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 0. अब डी पे हम जब फाइंड करते हैं हमें बी से डी तक आना पड़ेगा. तो कौन सी लोड है, वहाँ पर यूडीएल है. तो यूडीएल डी की तरफ कैसे जाएंगे, ये डायरेक्शन पे जाएंगे, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और clockwise direction in a cantilever beam is negative. So we have moment at D will be equal to minus 15 into 1 into 1 by 2. So this will be giving you equal to minus 7.5 kilonewton meter. Okay, नाउ हम लेट्स फाइंड इट मोमेंट एट सी पॉइंट, ये पॉइंट पे. अब एक यूडीएल आएंगे, दूसरा जो डी के ऊपर 20 किलो न्यूटन लोड है वो भी इंक्लूड होगा. तो ये डी कैसे जाएंगे, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, और ये भी अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. सो मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू माइनस 15 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2. अब ये यूडीएल यहाँ तक ही जा रहा है. अब यहाँ से बाकी डिस्टेंस 1 मीटर जो डिस्टेंस है हम इसको यहाँ पर डिस्टेंस पे ऐड करेंगे, तो +1. ओके, देन माइनस पॉइंट लोड गोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो 20 इंटू द डिस्टेंस इज 1 मीटर. सो दिस विल बी कमिंग इक्वल टू minus 42.5 किलो न्यूटन मीटर. Now let us find moment at fixed end which is at A point. तो हम B से लेकर A तक आना पड़ेगा. So moment at A will be equal to minus 15 into 1 into 1 by 2. अब बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक तो यूडीएल का था, हमने यूडीएल का डिस्टेंस भी लिया और फोर्स भी हमने लिया. तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर. सो यहाँ पर एडिशन पे हम एक्स्ट्रा 2 मीटर यहाँ पर लेंगे, +2 माइनस 20 इंटू, अब ये 20 किलो न्यूटन लोड यहाँ पर लग रहा है. अब 20 से ए तक, ये डी पॉइंट से ए तक जाएंगे, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर. सो दिस डिस्टेंस हियर विल बिकम 2 माइनस नेक्स्ट फोर्स वी हैव इज एट सी पॉइंट. तो ये कैसे जाएंगे, ए की तरफ, ये डायरेक्शन पे जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज, एंड इट इज़ माइनस. सो माइनस 20 इंटू सी से ए तक डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. सो इंटू 1. सो दिस विल बी गिविंग यू इक्वल्स टू minus 97.5 किलो न्यूटन मीटर. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. So at B point 0, C point 42, this is a D point. So at D point we have 7.5 kilonewton meter. C point पे it is coming around, so I'll mark it here, minus 42.5 kilonewton meter. और ये A point पे it is coming at 97, so I'll mark it here,
97.5 kilonewton meter. It is coming 97, so I'll mark it here. 97.5 kilonewton meter. So let us join the lines. Okay, now यहाँ से 97 से 42 पे जाएंगे, 42 से 7 पे जाएंगे, 7 पॉइंट, और यहाँ से 0 पे जाएंगे. So this is negative. So this is your negative bending moment diagram. So I hope this numerical is clear. Let us solve the second numerical for today's session. Draw SFD and BMD. Show all the important values in it. Refer the figure given below. So again, in here, cantilever beam is given, and as you can see in this beam, there is a 8 kilonewton load which is acting upwards. Instead of acting downwards on the beam, it is acting upwards. So how we have to take this into calculation? Well, finding the reaction, and we're finding the shear force, and we're finding the moment. Let us see how we can solve for such cases. So let us get started. Let's solve the second numerical. For the second numerical also the diagram is given. So let's start by finding its reaction. So I'll have only one reaction. RA will be equal to total load on the beam. So what is the total load? UDL 5 into 2 plus. So this 8 kilonewton load is acting from bottom to top. तो अगर हमने ये समीशन पे लेके गया है तो बॉटम टू टॉप जो आते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, राइट. और अगर हमने इसको राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो इट विल कम इन नेगेटिव. सो आई हैव -8, okay, then 10 kilonewton load plus 10. So this will be coming equal to 12 kilonewton. Now if you did not understand this one, so let me do it by summation of forces about x direction equals to 0. I'll do it the conventional method without sending them to right hand side direction first. So first यहाँ पर मेरा reaction RA आएंगे. Now जो forces ऊपर से नीचे आएंगे उसको हम प्लस लेंगे और नीचे से ऊपर को माइनस लेंगे, राइट. अब यहाँ पर मेरा रिएक्शन RA नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, RA पॉजिटिव. अब ये 5 kilonewton लोड ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मेरा माइनस होगा, -5 इंटू डिस्टेंस 2 मीटर, राइट. अब ये रिएक्शन फिर मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा. सो +8. और ये 10 kilonewton लोड जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये -10 इक्वल्स टू 0. ये हुआ. अब मैं ये जो भी नंबर्स है इसको सबको मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भेजती हूँ. आई ओनली कीप दिस RA हेयर. सो RA विल बी इक्वल टू, इफ़ आई सेंड दिस टू राइट हैंड साइड डायरेक्शन, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. सो ये 5 into 2 प्लस, राइट. अब ये RA यहाँ पर प्लस है, ये प्लस को उधर भेज दिया तो इट विल बी -8, एंड दिस will also change and it will become +10. So we have this same equation in here also, right. So this will be coming equal to 12 kilonewton. So I hope you understood this concept. So RA is coming 12 kilonewton here, right. अब यहाँ से let us find the shear force calculation. Number 2, shear force calculation. Okay, so for shear force at A,
फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू आर ए फोर्स आ रहा है, इस पे भी हम जो नीचे से ऊपर आएंगे प्लस, ऊपर से नीचे को माइनस, राइट। सो रिएक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है तो आर ए दिस इज पॉजिटिव 12 माइनस ऊपर से यूडीएल आ रहा है, सो माइनस 5 इंटू, तो यूडीएल का डिस्टेंस कितना होगा, अभी ए पॉइंट पे शुरू हुआ है तो उसका डिस्टेंस 0, दिस विल बी कमिंग इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। नाउ लेट अस फाइंड फोर्स एट बी एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, बी का लेफ्ट हैंड साइड ए डायरेक्शन पे कितना होगा, लास्ट फोर्स मिला 12 माइनस यूडीएल 5 इंटू उसका डिस्टेंस 2, so this will be coming equal to 2 kilonewton. Okay, so similarly force at B, right hand side of B, B का ये डायरेक्शन पे जाएंगे। अब देखो B और C के बीच में कोई लोड है नहीं है, तो ये जो लास्ट पे आपने 2 kilonewton मिला था, it will remain as 2 kilonewton only. Now let us find फोर्स एट सी एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, सी के लेफ्ट हैंड साइड पे ये डायरेक्शन पे फाइंड करेंगे। अब सी के ये डायरेक्शन पे भी बी और सी के बीच पे कोई फोर्स नहीं है, तो जो लास्ट पे 2 किलोन्यूटन मिला है इट विल रिमेन सेम एज 2 किलोन्यूटन ओनली। नाउ फोर्स एट सी राइट हैंड साइड ऑफ सी, दिस डायरेक्शन, सो व्हाट डू वी हैव देयर, आई हैव लास्ट फाउंड इज 2 kilonewton. Now this 8 kilonewton लोड कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, सो 2 + 8 दिस विल कम इक्वल टू 10 kilonewton. Similarly फोर्स एट D एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ D, और अभी D, C और D के बीच में कोई फोर्स है, there is no force there, so the force that we got at C right hand side direction it will remain same, which is equals to 10 kilonewton. Now force at D right hand side of D, this will be coming equal to, last force that we got is 10, अब D के ऊपर 10 kilonewton लोड लग रहा है, तो it will be equal to -10, so this will come equal to 0. Now this force at D, right hand side of D is towards this direction, which is also, we can also say this is equal to force at E. So since there force at E पे कोई भी फोर्स नहीं है तो वहाँ पर 0 आ रहा है, तो हमारा फोर्स D तक ही आ रहा है। लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एंड सी कैसे आएंगे डायग्राम। तो यहाँ पर फोर्स एट ए इज कमिंग 12 kilonewton, और बी पॉइंट पे जाते इट इज रिड्यूसिंग एंड बिकमिंग 2, सो 2 kilonewton, एंड सी पॉइंट पे भी बी पे, दोनों बी पे 2 kilonewton है और सी पे इट इज, यहाँ पर ये पॉइंट पे 2 kilonewton हुआ है, राइट। लेट मी जॉइन द लाइंस, राइट, ये मेरा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट पे राइट हैंड साइड पे जब हो जा रहा है तो उसका इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग 10 kilonewton, सो आई पुट इट 10 kilonewton समय है लेस देन 12, सो दिस पॉइंट इज 10 kilonewton, राइट। अब ये 10 kilonewton D तक 10 kilonewton है मेरा, राइट, सो D तक 10 kilonewton है, एंड जब E पे पहुंच रहा है ये पॉइंट पे यहाँ पर 0 हो रहा है, जब मैं D का राइट हैंड साइड पे जा रही हूँ, राइट हैंड साइड पे उसका D पॉइंट पे इट इज़ कमिंग टू 0, राइट, सो आई जॉइन दिस लाइन हेयर 0, एंड D और E के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है तो ये पॉइंट 0 ही रहेंगे। ओके, सो दिस इज योर 10 kilonewton लोड, दिस इज पॉजिटिव।
यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन. Okay, and this is your shear force diagram. Now let us find bending moment calculation. Bending moment calculation. Now bending moment के लिए फ्री एंड पे मोमेंट 0 होंगे, राइट. सो फ्री एंड कौन से पॉइंट है? डी पॉइंट फ्री एंड है. ई पॉइंट पे तो देर इज़ नो फोर्सेस, सो इट इज़ 0 ओनली, वहाँ पर तो पहुँचेंगे नहीं. सो मोमेंट एट डी विच इज़ फ्री एंड, जहाँ पर लास्ट लोड लगा है, दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0, राइट. नाउ मोमेंट एट सी, ये पॉइंट पे फोर्स फाइंड करने के लिए हमें डी से सी तक जाना पड़ेगा. और ये डी कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज. इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो force at C will be equal to, clockwise is negative, minus 10 into the distance is 2.5. So this will become equal to 25 kilonewton. Now moment at B point. B point पे एक लोड 10 किलो न्यूटन का आएंगे, दूसरा ये एक 8 किलो न्यूटन लोड विच इज़ गोइंग अपवर्ड्स. नाउ हाउ विल दिस 10 किलो न्यूटन लोड विल टुवर्ड्स बी के डायरेक्शन पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही जाएंगे. अब ये जो 8 किलो न्यूटन लोड है बी के तरफ, ये ऊपर ऐसे फेस कर रहे हैं, तो ये बी की तरफ कैसे जाएंगे? इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. So what is this direction? This direction is a anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction is here a positive sign. So कितना होगा? Moment at B will be equal to minus 10 into distance क्या है? 10 से D से लेकर B तक distance 2.5 plus 1 is 3.5. 3.5. अब ये 8 किलो न्यूटन लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, तो प्लस 8 इंटू, और सी से बी तक डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. सो 8 इंटू 1. दिस विल बिकम इक्वल टू, हियर इट इज माइनस 27 किलो न्यूटन मीटर. ओके. नाउ सिमिलरली अब फिक्स एंड पे हम मोमेंट फाइंड करेंगे. तो मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू, अब लास्ट पे ये डायरेक्शन, ये फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसे ही रहेंगे. हम जब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, सिर्फ ये यूडीएल ये डायरेक्शन पे जाएंगे. इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आई विल हैव minus 10 into, what is the distance now? Total distance is 2.5 plus 1 plus 2, so it will become 5.5. 5.5 plus 8 into 3, ये C पॉइंट से A पॉइंट तक डिस्टेंस 3 मीटर है, so into 3 minus UDL, it is going in a clockwise direction, so minus 5 into 2 into 2 by 2, so this you will be getting equal to minus 41 kilonewton meter. Okay, now let's draw the diagram. D, ये पॉइंट पे 0 है, E पॉइंट पे since there is no force, D पॉइंट पे I have 0, right, और C पॉइंट पे minus 25, so ये पॉइंट पे minus 25, then B पॉइंट पे 27 minus 27, and A पॉइंट पे minus 41. So let's join the line. 41 kilonewton meter, 27 kilonewton meter, 25 kilonewton meter. Here I forgot meter, it's unit, so here it is 0. So joining this line,
it will be like this, somewhere like this. This is negative. This is the bending moment diagram. So I hope this numerical is also clear. This is the last numerical for today's session. So it says, draw SFD and BMD for a cantilever beam loaded as shown in the figure below. Indicate all the important values. So a cantilever beam is given. The length of this cantilever beam is given along with all the loadings. So it is in detail. So for this cantilever beam, we need to find shear force and bending moment. So let's get started. So let's solve the last numerical. Let's solve by finding its reaction. So I'll have only one reaction, which is reaction RA here. So RA will be equal to total load on the beam. So I have UDL 1 into acting for a लेंथ ऑफ 3.5 मीटर. UDL यहाँ से A से लेकर C तक है और डिस्टेंस कितना है 2.5 प्लस 1. सो इट इज़ 3.5 मीटर प्लस 3 किलो न्यूटन लोड प्लस 2 किलो न्यूटन लोड. सो दिस विल बी कमिंग इक्वल टू 8.5 किलो न्यूटन. Okay, now let's find number 2, shear force calculation. So shear force calculation, force at A will be equal to, at this point will be equal to RA, which is equal to 8.5 minus, I have a UDL acting there, so 1 into distance UDL. अभी A पे शुरू ही हुआ है तो 0. So this will come equal to 8.5 kilonewton only, right? So force at B, left hand side of B. So मैं force at B इधर इतने पे check करूँगी. So इतना पे कितना होगा? Last force that we got is 8.5 minus, I have a UDL acting there. So 1 into, अब distance A से लेकर B तक ही वो travel हुआ है. So distance कितना है UDL का? 1 meter only. So 1. So 8.5 minus 1, I have 7.5 kilonewton. Now next, force at B, right hand side of B. So I consider it this side. So last force that I got is 7.5. अब B के ऊपर 3 kilonewton load is acting. So that we will consider in right hand side direction. So it will be minus 3. माइनस अगेन 1 किलो न्यूटन लोड बी से फिर से शुरू हो रहा है तो 1 इंटू, अब यहाँ से बी से शुरू हो रहा है तो उसका डिस्टेंस 0 रहेंगे, 0. सो दिस विल बी कमिंग इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन, राइट. नाउ सिमिलरली फोर्स एट सी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, वी सी पॉइंट के ये डायरेक्शन पे. Last force that I got is 4.5 माइनस B और C के बीच पे UDL है और B से शुरू होकर C पे एंड हो रहा है और C पे एंड हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 2.5 मीटर. सो 1 into 2.5. So this will be coming equal to 2 kilo Newton. Now last D point पे we need to get exactly 2 kilo Newton. So let us see. Force at D equals to, now check, last force हमने C पे कितना मिला 2 किलो न्यूटन मिला. अब C और D के बीच पे कोई फोर्स है? there is no force in between, so D पे 2 किलो न्यूटन ही रहेंगे, right. now force at E पॉइंट पे अगर आपने चेक किया तो ये फोर्स एट लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं D पॉइंट का. E पॉइंट पे 0 आना चाहिए. सो लेट्स क्रॉस चेक इट. सो फोर्स एट D राइट हैंड साइड और फोर्स एट E. अब राइट हैंड साइड, D के राइट हैंड साइड देखा तो यहाँ पर इस साइड पे तो लास्ट फोर्स कितना मिला D तक 2 और देयर इज एग्जैक्टली 2 किलो न्यूटन लोड एक्टिंग ऑन टॉप ऑफ D. सो इट विल बिकम माइनस
2, which will come equal to 0. So there is no force at E, it is 0. So here also we got it right. So let's draw the shear force diagram. Okay. So force at A I have 8.5. I'll mark it somewhere here. 8.5 kilonewton. Force at B, little, it has decreased by 1, 7.5 kilonewton. Let me join the lines. Okay, now force at B, same point to the right hand side direction, it is becoming 4.5. So 7.5, 4.5 kilonewton. It is decreasing, right? And then when it is reaching C point here, it is becoming 2 kilonewton. So 2, decreasing and becoming 2. So this point is 2 kilonewton here. And force at D, it is remaining constant. So यहाँ से यहाँ तक constant again, 2 kilonewton. And force at D, right hand side, जब force at D point पे right hand side पे 0 हो रहा है, तो it is 0. And from here to here it is 0, E point पे. Okay, so this is positive shear force. So this is a shear force diagram. Now let's find bending moment. Number 3, bending moment calculation. Okay, so here free end पे 0 आएंगे. So कौन से है free end? D पे free end है. So moment at D equals to 0, right? अब जब moment at C फाइंड करते हैं, ये फोर्स कैसे जाएंगे? Clockwise direction. So moment at C will be equal to -2 into 1. C तक, D से C तक 1 meter distance है. So it is equal to -2 kilonewton meter. Now moment at B, ये पॉइंट पे, तो यहाँ से और एक लोड आ रहा है, D से B तक जाते हैं तो एक यूडियल भी आ रहा है. सो यूडियल क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे. सो आई हैव -2 इंटू, अब ये पॉइंट से B तक का डिस्टेंस चेंज होगा तो कितना होगा? 2.5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस यूडियल 1 इंटू 2.5 into 2.5 by 2. So this will be coming equal to minus 10.125 kilonewton meter. Okay, now let's find moment at fixed end, which is moment at A. Up from this point A to C आना पड़ेगा. So what is the other force adding up? It is the 3 kilonewton load. So it will go in a clockwise direction. So I have -2 from D point, -2, और distance कितना होगा? 1 plus 2.5 3.5 plus 1 4.5. So it is becoming into 4.5 minus UDL का, अभी UDL C से शुरू हुआ है, B तक C से शुरू हुआ है और ये UDL A तक उसका इंटेंसिटी सेम है. तो ये कितना होंगे? 1 इंटू डिस्टेंस कितना है? 3.5 इंटू 3.5 by 2. डिस्टेंस इतना रहेंगे. ओके, एंड another one, I have a point load at B, 3 kilonewton going in a clockwise direction. So -3 into 1. This will be coming equal to minus 18.125 kilonewton. Okay, so let's draw the bending moment diagram. So at E कोई भी फोर्स नहीं है तो 0, D पे 0 है because it is a free support there, and moment at C point -2, D point पे
minus 10, minus 10, then E point P minus 18. So let's join. So this is 18.125 kilonewton, here 10.125 kilonewton meter, here I have 2 kilonewton meter. So let's join the line. It will go in this manner. Okay, so this is negative, and this is a bending moment diagram. So I hope this numerical is clear. This is the last numerical that we'll be solving for cantilever. From next session we'll be solving for overhanging beams. See you in next session.